वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बुआ जी। फतेह फतेह बेटा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम वालेकुम सलाम। Good evening to everyone. Good morning to overseas. So today, on a very special day, World Mental Health Day, right? So we are so like blessed कि आज Thursday है और Thursday नु ये दिन आया. So any which ways, we are celebrating every day World Mental Health Day. We are so blessed that Jeevan Jach is working from so many years on World Mental Health Day. But today, yeah, as world is celebrating, why not we? So let's all take a few minutes so that we can just appreciate Jeevan Jach. So on behalf of Jeevan Jach, today I would like to take few minutes to talk about mental health. सबसे पहले, I just want to ask everyone, how are you feeling today? Just put it in the chat box. How are you feeling today? Just take a moment and think about it. Come on, everyone, all my JJ counselors, everyone. Yeah, I can see happy, blissful, very less. Yeah, come on. How are you feeling today? If someone asks you, what will you say? Great. On top of the world, grateful, शुक्राना, awesome, great, relax, बहुत खुशी हो रही है, blissful. Thank you so much. Exactly. हम अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं. But when was the last time you checked in with your mental health? Very less. Sometimes. अक्टूबर को हम जो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ के रूप में ये आज हम मना रहे हैं, which make this the perfect time to talk about mental health. अक्सर में तो जीवन जांच हर थर्सडे सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में दिल्ली कॉलेजेस सब जगह काम कर रहा है मेंटल हेल्थ के लिए. बट टुडे एक कहते हैं ना, अगर वर्ल्ड पूरा मना रहा है तो वो भी हम भी एक एनर्जी ये देंगे आज, क्योंकि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड दैट. अब देखो, जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है. जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, छोटा सा कट आता है, जहाँ फीवर होता है, वी इमीडिएटली टेक केयर, डॉक्टर के पास जाना है. जब बॉडी नीड्स रेस्ट, जैसे आजकल थैंक्स टू मनीष ऑल्सो कि जितना वो योगा पे हमें ले रहा है कि मेडिसिन नहीं लेनी है, इट्स अ सिग्नल फॉर योर बॉडी टू टेक रेस्ट. हम लेते हैं ना रेस्ट, आराम करते हैं. तो वैसे ही जब हमारे थॉट्स फीलिंग्स या इमोशंस इफेक्टेड होते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अ मेंटल हेल्थ टू. क्या हम करते हैं? आई जस्ट वॉन्ट यस और नो. फीवर होता है तो सब फटाफट या रेस्ट करते हैं या डॉक्टर पे जाते हैं. क्या जब हमारी फीलिंग्स थॉट इमोशंस जब पाइलअप हो जाते हैं, क्या हम उनको सुनते हैं? मेंटल हेल्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी इनर हेल्थ, जो हमें स्ट्रेस से डील करने में, रिलेशनशिप्स हैंडल करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. आई एम श्योर जितने लोग जीवन जात से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, जो अभी भी जुड़े हैं, दे आर वर्किंग. आई कैन जस्ट वाउच कि कोई भी ट्रिगर आता है, सिचुएशन आती है, वी ऑल आर वर्किंग ऑन दैट. जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी हमें जिंदगी में चैलेंजेस फेस करने में मदद करती है, वैसे एक हेल्दी माइंड हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल करने में के लिए तैयार करता है. जैसे हमने बोला ना, बिल्डिंग स्पिरिचुअल मसल्स. हम जिम जाते हैं, हम मसल्स, हम वेट्स उठाते हैं,
2 kg, फिर 5 kg, फिर 10 kg का हमें उठाया जाता है, राइट? क्योंकि हमारे मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, राइट? सेम वे हमारे मन के जो मसल्स हैं, जो ट्रिगर्स आते हैं, पहले छोटे आएंगे, फिर हमें बड़े भी आएंगे, हम जिस रास्ते में चलेंगे ना और ट्रिगर्स आएंगे। तो ये हमारे लिए वेट्स आते हैं, और ये वेट्स को हमें कैसे हैंडल करना है, वो हम जीवन जांच आपको ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है कि लाइफ में कितना भी वेट उठाना पड़े, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें उसको कैसे ब्यूटीफुली रिएक्ट ना करते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए कैसे डील करना है। ये है मेंटल हेल्थ। और याद है सबको वो मूवी 3 इडियट्स का फेमस डायलॉग? कोई बोलेगा मुझे? रांचो क्या बोलता था? कमन कमन एवरीबॉडी राइट इट डाउन। All is well. All is well. पहली बात तो कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं बंद कर रही हूँ आज का सेशन। आई मीन दिस इज रियल। All is well. All is All well. is well. आई All वांट is well. एवरीवन टू All से is well. ऑल इज All All is is well. well. All एग्जैक्टली, is well. एक्सीलेंट, ऑल इज वेल। सो जब रांचो कहता है ऑल इज वेल, वो अपने दिल को समझाता है, समझा रहा होता है कि डरने की जरूरत नहीं है। हम भी अपने दिल को ये बोल के काम कर सकते हैं। जैसे बुआ जी ने, मुझे याद है कोविड में फियर का, कोविड-19 फियर लिया था, क्या बोला था? कोविड की फ्रीक्वेंसी फियर से बहुत कम है। जस्ट इमेजिन, डर के लिए लोग मर रहे थे। तो जब ये ऐसा डर है, उस डर को हमें कन्फ्रंट करके उसको काम कर सकते हैं जब भी सिचुएशन टफ लगे। ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलती कि ऑल इज वेल कहने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट यस, अगेन इट विल रिमाइंड अस, पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। जब हमारा मन स्ट्रेस में होता है, जब हमारे मन में मिक्स इमोशंस चलती हैं, थोड़ा पॉज लेना है। पॉज लेके अपने मन को समझाना है कि अभी मैं इसको रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं सोचूंगी, मेरे थॉट्स को ट्रांसम्यूट करूंगी, नेगेटिव थॉट्स को मैं पॉजिटिव थॉट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर से सोल्यूशन निकालूंगी, बिकॉज एवरीथिंग इनसाइड मी। डू यू ऑल एग्री जीवन जांच? यस, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी मेरे अंदर है, जिसके लिए हमने आपको बहुत सारे टूल्स दिए हैं, जीवन जांच में दे भी रहे हैं। चलो अब कुछ सिंपल टिप्स डिस्कस करते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, क्विकली, वेरी वेरी स्मॉल, विच वी ऑल कैन डू इट एवरी डे, वी आर डूइंग, एंड दोज आर नॉट डूइंग जस्ट मेक अ नोट्स। सबसे पहले डेली चेक इन करो। रोज अपने आप से पूछना है, हाउ आई एम फीलिंग टुडे। अगर अच्छा फील कर रहे हो, पैट योरसेल्फ, एक्नॉलेज, ग्रेट। अगर नहीं, तो क्या चीजें थोड़ी बेटर कर सकती हूँ, जिसके लिए मैंने आपको ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन सब कराए थे। राइट इट डाउन कि ओके, हियर स्टिल आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, दीज आर माई शॉर्ट टर्म गोल्स। तो वो लिखो, दैट विल मोटिवेट यू। सेकेंड थिंग, ब्रीथ डीपली। जो दीपिका मैम ने हमारा एक पूरा सेशन लिया था, मनीष और इसने, योगा के ऊपर, राइट? सो जब कैसा कभी स्ट्रेस ज्यादा लगे, तो एक सिंपल सी टेक्निक है जो हम हमेशा, अभी भी सिमरन ने भी कराया था, डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद करो, स्लोली ब्रीद एंड ब्रीद आउट। ये आपको काम करेगा, रिलैक्स करेगा फॉर अ मोमेंट। मैं ये मेडिटेशन नहीं बोल रही हूँ जी, जस्ट फॉर अ मोमेंट हम कर सकते हैं, बट हमें जीवन जांच में जो बूजी ने क्या सिखाया है, 24/7 नाम सिमरन मेडिटेशन करना है। अगर हम वो करेंगे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। और कभी हो भी गया, इट्स ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, टॉक टू योर इनर सेल्फ एंड जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। टेक ब्रेक्स। इसके लिए मैं क्रेडिट देती हूँ मनीष को, जो हमेशा हमें बोलते हैं कि ब्रेक्स लेनी चाहिए, जो कि इम्प्लीमेंट इतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल्सो वांट मोटिवेशन कि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना है, हम बोलते हैं ना कि 2 आवर्स के बाद जस्ट वो अपने जो बीके शिवानी भी बोलते हैं कि जस्ट गो फोकस ऑन वन थिंग, जस्ट रीड लाउडली द अफर्मेशंस, जस्ट वो मकरासन में लेट जो 1 मिनट के लिए, कि हर 2 घंटे बाद, वो तो 1 घंटे बाद बोलते हैं, हर 2 घंटे बाद हमें ये करना चाहिए, राइट? बट मैं मानती हूँ ऐसे नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट विद वन। इमीडिएटली मैं आपको 2-2 घंटे बाद बोलूंगी तो 10 बार ही नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आई स्टार्ट विद वन, स्लोली टू, ऐसे करके हमें अपनी बॉडी को जैसे रेस्ट देनी है, वैसे ही हमारे दिमाग, हमारे मन को भी छोटी छोटी ब्रेक्स चाहिए।
which will help to recharge my brain. अभी उसके लिए क्या करना है? Again, just calm yourself. Whatever you like, you can do that. Like painting कर सकते हैं, drawing कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, cooking कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं. So connect with others. अच्छा लगता है जब हम अपने friends और family से बात करते हैं, right? Just pick up a call. Call a friend. Go for a coffee. कभी कभी सिर्फ अपने मन की बात किसी से शेयर कर लेना भी बहुत सूदिंग देता है, राइट? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम जीवन जांच में 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं. So with Booji, with Rimple, we have more than 37 counselors now. Again, I've seen yesterday, I include 3 more. So clap hands for Carol, Tarvinder, and Amita Shah from US. 3 special educators joined Jeevan Jach NGO to help the children for the remedy sessions. So we are so proud. So you can just call, you can just message me, Booji, just to take an appointment, talk 1-to-1, vent it out, and just handhold. That's all. लास्ट, डू समथिंग यू लव, जो मैंने अभी आपको शेयर किया, जो अच्छा लगता है. थोड़ा सा टाइम निकालो जिस चीज को आपको खुशी देता है, चाहे डांस करो, जुम्बा करो, योगा करो, वॉक जाओ, रीडिंग करो. दीज आर ऑल थेरेपीज फॉर योर माइंड टू रिलैक्स एट द एंड ऑफ द डे. नॉट एंड ऑफ द डे, अभी वैसे एंड आ ही रहा है आज के दिन का, बट आई जस्ट कंक्लूड कि मेंटल हेल्थ को हमारी फुल अटेंशन चाहिए. जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं कि वॉक करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें बहुत जरूरी है ध्यान रखना. और जब भी लगता है जिंदगी डिफिकल्ट हो रही है, एक बारी बोल देना. क्या बोलेंगे हम सब लोग? राइट इट इन द चैट बॉक्स. पांचो क्या बोलते हैं? All is well. All is well. So ये बोल के again आपको पुश करना है. So with this, I would like to invite our Baljeet ma'am, co-founder of जीवन जांच. मैं तो उनको कवित्री बोलती हूँ. इतनी अच्छी कविता गुरबानी को लेके मैंने कभी नहीं किसी को आज तक मेरी लाइफ में देखा. एंड व्हेन आई वाज रीडिंग इन गुरु गोबिंद कॉलेज आल्सो, दे वर लाइक, ओ माय गॉड, ऐसी भी कविता बनती हैं. सो वी आर लाइक, रियली शी इज अ जेम, आई विल से. सो बैकबोन ऑफ जीवन जांच. ओवर टू यू बलजीत मैम, क्योंकि गुरबानी भी मन की बात करती है. पूरा आज जो वर्ड मेंटल हेल्थ है, कोई भी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, गीता लगा लो, बाइबल लगा लो, कुरान लगा लो, है ना, वो सबने आज, वो तो कब से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए हमें बोल रहे हैं कि रोज सेलिब्रेट करो 24/7. ठीक है, बट आज हम देख रहे हैं बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोग डिकोडिंग करके अपने मन को कैसे वहां से हील कर रहे हैं. सो आई वुड लव बलजीत मैम टू जस्ट से फ्यू वर्ड्स ऑन मेंटल हेल्थ डे. रिम्पल जी, आपने काफी कुछ सबके साथ शेयर किया, और मैं अब पंजाबी में बोलूंगी अभी, क्योंकि गुरबाणी दे नाल आधारित जो मैं कविता लिखी है. सो आई स्टार्ट विद ਅੱਜ ਦੇ वर्ल्ड मैंटल हेल्थ डे ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਨਾ. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿੰਪਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਅਗੇਨ ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਕੱਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ. ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੱਗੀ,
ਚੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਕੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਸ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਨ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਮਨ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇੜਾ, ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇੜਾ, ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाह वाह वाह, आई थिंक वी शुड क्लैप हैंड्स। क्या कला है। सो थैंक यू टू जीवन जाट टीम जो बलजीत मैम के साथ आई थिंक 10-12 जाने तो कविता वाले जुड़ गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लिखने वाले। सो जीवन जाट अपनी बुक बहुत जल्दी बनाएगा कविता की और पूरे वर्ल्ड में जाएगी। थैंक यू सो मच बलजीत मैम, योर वर्ड्स आर रियली, जो अपने दिल से लिखा है गुरबानी को लेके, रियल मेंटल हेल्थ के लिए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अभी अभी तो गेम बाकी है। कौन आने वाला है अभी हमारे यहाँ पे? यस, अ यूनिवर्सल हीलर। मैं तो बोलती हूँ यूनिवर्सल हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, राइट? आवर ओन बिंद्री कौर जी with a beautiful law of today what she is going to take। उन्होंने बहुत कुछ कराया है, डिवाइन वननेस कि अंदर ये जो मेंटल हेल्थ के लिए बुआ जी कहते हैं ना, जो बाहर का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, राइट, यूनिवर्स, है ना? तो ऐसे हमारे अंदर का जो आज हम बात करें ना, रिंपल ने किया, बलजीत मैम ने किया, कि कैसे हमने अंदर को आप सवारे करना है। उसके लिए जो बुआ जी ने हमें लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन, राइट? सो आज एक मैं ब्यूटीफुल कोट से चालू करती हूँ और आप गेस करोगे कौन सा लॉ है। नथिंग हैपेंस बाय चांस, फॉर एवरी कॉज देयर इज एन इफेक्ट, and for every effect there is a cause. You create your own life, be deliberate and cause the effect you desire। I would like, अगर जिन्होंने ध्यान से सुना है प्लीज राइट इट इन कॉज एंड इफेक्ट, कौन सा लॉ आज होने कॉज वाला? एंड इफेक्ट। यस, सीमा जी ने बोला द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। डू यू ऑल एग्री विद हर? क्या हम सब रेडी आज? यस।
और ये Yes. बुआ जी हमें ऑलरेडी समझा चुके जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पर आज एक नए तरीके से वो हमें समझाने जा रहे हैं। एंड आई वुड लाइक बुआ जी टू टेक ओवर एंड प्लीज स्टार्ट द सेशन। जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। Good evening to all and good morning to the overseas. Ram Ram ji. So today, very important law. पर मैं आपको पहले ही बता दूं, every law is interconnected. It is just the magic of the words. अब जैसे इन्होंने कहा है कि the law of the cause and the effect. Cause का क्या मतलब हुआ? कारण. Effect क्या है? उस कारण का नतीजा. एक कारण तो कारण का नतीजा. अब कारण है क्या? What is the cause? Everything starts from the cause. जो भी सृष्टि बनी है ना, ये सब एक कॉज से ही शुरू हुई है. अगर हम आज कहते हैं कि देयर इज पोल्यूशन, इस ब्रह्मांड में देखो पोल्यूशन है, तो इसका कॉज कहाँ है? कारण तो है जरूर, और ध्यान रखना वो जो कारण है ना, वो हमारे अंदर ही है. ये कारण जो है ये हमारे अंदर ही है, और यही कारण का नतीजा है जो बाहर मिलता है. बेशक वो हमारे शरीर पे हो, बेशक हमारे रिश्ते में हो, बेशक इट कम्स ऑन द फॉर्म ऑफ ट्रिगर्स, पर वो कारण का जो नतीजा है वो आएगा. सो दिस इज कॉल्ड द कॉज एंड द इफेक्ट. नाउ a very nice way of explaining to you is this. For example, किसी ने किसी को दुख दिया, कोई तकलीफ दी, या किसी को कोई गलत बोला, सो ये जो है इट इज कॉल्ड द कॉज. मैं कॉज बनी, किसी को मैंने तकलीफ दी. अब जो दूसरा बंदा था उसको बड़ी चोट लगी, ये क्या हो गया? ये इफेक्ट हो गया. मैं कॉज थी और उसको इफेक्ट, उसको थोड़ा सी तकलीफ हुई. अब जब उसको तकलीफ हुई उसको इफेक्ट हुआ. अब जब उसको इफेक्ट हुआ तो उसने बोला आई विल टीच यू अ लेसन. कॉज फिर शुरू हो गया. सो हर एक इंसान एक इफेक्ट एंड कॉज चलता है. दिस इज द साइकिल. जो इफेक्ट है वो तो हो गया आपका, जो आपने महसूस किया, पर जो कॉज है वो एक बीज फिर डाल दी. तो आप सोच लो कि हर एक इंसान के अंदर कॉज एंड इफेक्ट दोनों चलेंगे. किसी ने मेरे को कुछ बोला, बड़ी तकलीफ हुई, दैट पर्सन वाज द कॉज, ये मेरे अंदर इफेक्ट हुआ, तकलीफ हुई, हर्ट हुई, और फिर मैंने बो दिया एक बीज, अ कॉज अगेन, कि नाउ आई विल टीच हर अ लेसन. सो effect and cause. So you can imagine the whole universe, पूरा ब्रह्मांड कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट पे ही चल रहा है, और ये रुक नहीं रहा है. बट जैसे आज हमने मेंटल हेल्थ का किया था, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लॉज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? ये लॉ ही ईश्वर है. ये लॉ ही ईश्वर है. एको नाम हुक्म है. हुक्म क्या है? सिद्धांत है. द लॉज ऑफ द यूनिवर्स है, लॉ ऑफ नेचर है. तो स्पष्ट हो गया कि दीज लॉज आर 24/7 वर्किंग. दिन रात काम कर रहे हैं. वो ये नहीं देखते कि मैं अभी इंद्री सोई हो तो मैं बंद कर दूं. नो, वो 24/7 चल रहे हैं, और हमारे थॉट्स भी वो भी चल रहे हैं, और हर जगह में मैं कॉज इफेक्ट में ट्रैप हो रही हूँ. सो यू कैन इमेजिन कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड दिस लॉ. इंट्रोस्पेक्ट, देखो अपने अंदर क्या हो रहा है, कि वाकई दोनों चीजें चल रही हैं. किसी का फोन आया, अगले ने ऐसे ऐसे बोला है, आपको पता है, तो मन क्या करते हैं? उसने मेरे बारे ऐसे बोला. इफेक्ट. अब देखो कोई कॉज कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं किसने किया है, ये किसने फैलाई है, कॉज शुरू हो गया. प्लीज इंट्रोस्पेक्ट 24/7, बी अलर्ट. किसके ऊपर? मन के ऊपर. क्योंकि मन इज द बैंक, जिसके अंदर हमारे सारे फुरने जितने हमारे थॉट्स हैं, लेट इट बी गुड और बैड, जितने हमारे इमोशंस हैं वो उसी के अंदर है. सो हमने किसके ऊपर अवेयरनेस रखना है? अपने मन के ऊपर. और आज का टाइम क्या है? मेंटल हेल्थ. यहीं पे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है. क्यों? कूड़ के साथ पड़ा हुआ है, रहता फैलाया हुआ है, इतना रहता फैलाया हुआ है कि हम संभाल ही नहीं पा रहे.
So now, why is this law important? ये law important क्यों है? We have to understand कि कहते हैं कि ये कभी भी by chance नहीं होता. कोई कहता है ना कि ये by chance होता है, ये कभी by chance नहीं, ये choice होती है. And why it is important? क्यों? अगर मेरे को पता हो कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई है, कोई स्थिति आई है, और इन्हीं सिचुएशन आया है विच इज नॉट प्लेजेंट, अच्छा नहीं है, तकलीफ दे रही है, मैं उस चीज को चेंज कर सकती हूँ. हाउ? हाउ? गोइंग टू द कॉज. जब मेरे को कॉज पता लगेगा तो ऑटोमेटिकली द इफेक्ट ठीक हो जाएगा. आज मेरे मन पे बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, मेरे अंदर बहुत अंदर वाइसेस हैं, दे आर द कॉज. शरीर पे रोग आ गया, अब वो क्या है? वो इफेक्ट ऑफ द कॉज है. जो शरीर के ऊपर में बॉडी पे जो डिजीज आती है वो इफेक्ट है. किस चीज का इफेक्ट है? वो जो कॉज है ना अंदर मन का, उसका ही इफेक्ट हो रहा है. अब मेरे को पता लगा कि ये जो इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द कॉज, वी हैव द पावर टू चेंज द कॉज. वी आर वॉरियर्स नाउ, वी कैन चेंज. हमारे पास वी आर द एक ओंकार, वी आर द ओम, वी आर द क्रिएटर, द सस्टेनर्स एंड द डिस्ट्रॉयर्स. तो क्रिएट किया, नेगेटिव किया, शरीर भी रोगी हो गया. अब मेरे को पता लग गया, हो ये तो मेरा सारा मेरा अपना ही बीज है, ये तो मेरा ही कॉज है, इसके ऊपर तो पावर है मेरे पे, मैं तो इसको ठीक कर सकती हूँ. ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाइयां शवाइयां देंगे, बट डजंट गो फ्रॉम द रूट. रूट क्या है? वो जो मेरे अंदर है. तो आई हैव द पावर कि मैं अपने उस कॉज को चेंज कर दूं. अगर वो चेंज कर दूंगी, मैं बॉडी विल बी रीमॉडल्ड. So I can remodel situations, relationship, diseases, I can remodel. इसीलिए कहते हैं कि this law is very, very important to understand. Now, कहते हैं कि it is by chance and not by choice. But no, it is not by chance, it is by choice. जैसे अभी कोविड हुआ, कहते हैं कि कोविड by chance आया. No, it did not come by chance. ये हमारा ही था. बिकॉज कहा जाता है कि हमारे अंदर इतना डर कि उसकी फ्रीक्वेंसी सो लो कि हमने उसको अट्रैक्ट कर लिया. तो हमने क्या किया ड्यूरिंग द कोविड? हमने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हमने वो डर को निकाल दिया, हम निर्भय हो गए, हम निर्वैर हो गए, हमने अंदर इतना प्रेम खत्म हो गया कि आखिर हार के हम वी फॉट अगेंस्ट द कोविड. तो द पावर इज विद अस बिकॉज वी नो द कॉज ऑफ इट. नाउ कहा जाता है why good happens to those people who do bad lives. अब ये बड़ी बार is a common question कि हाय वो तो इंसान इतना अच्छा है, but then उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? Why good happens to those people who do bad life? Vice versa. For example, वो इंसान बहुत ही गलत है, बहुत गलत कर रहा है, पर उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है. बच्चे कहेंगे जी वो इतना पैसा, क्या बढ़िया गाड़ियां हैं, उसको घूम रहा है, सब कुछ और इतना अच्छा, पर ही इज अ वेरी करप्टेड मैन, बड़े गलत काम किए. ये कैसे हो सकता है? ये न्याय थोड़ी है. पर कहते हैं ना कि जो भी आप यू कैन द अफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द कॉज. यहाँ पे अब ये लॉ विल कम. कहा जाता है कि जो भी तुमने बीज बोया है उसका फल तो तुमको खाना पड़ेगा. जो कॉज है उसका इफेक्ट तो आएगा. ये तो अट्टाल है. दिस इज द लॉ. अब ये सारे जो बीज है कहां पे? सबकॉन्शियस माइंड में. सब सबकॉन्शियस माइंड में. जब सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी फाइलें होती है, जस्ट लाइक फाइल्स. कोई ऐसा फाइल होता है कि जो मैंने 10 साल पहले, हो सकता है कोई फाइल और डरिंग माई चाइल्डहुड, हो सकता है कोई ट्रॉमास डरिंग माई यूथ, हो सकता है कोई ना कोई फाइल 2 साल पहले, हो सकता है कोई फाइल 2 दिन पहले भी हो. दे आर ऑल फाइल्स, बीज के फाइल्स हैं. अब now a time comes when I'm enjoying life, I have money, I am enjoying life. तो बच्चे जो देखते हैं कहते हैं हाई जी इतना करप्टेड, इतना कुछ हुआ और इतना कुछ ये कर रहा है, हाउ कम? इतना कुछ ऐश कैसे कर रहा है? इतने तो बड़े कांड की. ये जो ऐश कर रहे हैं ना, जो उसके पास पैसा आ रहा है, जो शोहरत आ रही है ना, ये उसके बीजे हुए हैं. somewhere his files float, they are all floating. जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वो फाइल ऊपर आके ठहर जाएगी, वही मैनिफेस्ट होगा. बट जो गलत बीजे हुए वो भी आएंगे, अपने समय के साथ आएंगे, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी.
जैसे समा विल बी राइट, जैसे वो इंसान बाहर के आएंगे, पोस्टमैन विल कम, एवरीथिंग रेडी, मैनिफेस्ट होगा। सो बच्चों को ये कहना जरूरी है कि आप सोचो कि हम बीजे बिक और अमृत मिले, लेकिन नहीं, बीजा बिक है तो हमको बिक मिलेगा ही मिलेगा, पर वो समय से आएगा। पर हम कहते हैं नहीं जी, आज बीजा तो उसको आज ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आज उसने हम लोग को ऐसे बोला, आज ही उसको भगवान उसको रब उसको पनिशमेंट। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। He is no one to give you the punishment and the awards. It is you who do it yourself, because this is the law. What you sow, so shall you reap. जो तुम बीज बोओगे उसी का तुमको फल मिलेगा। वो जो बीज बोया है वही हमारा, कहते हैं ना कि दैट इज द कॉज, वही कारण है। आज जीवन में जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण इज डीप रूटेड इनसाइड आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये लॉ है। तो हम कहते हैं ना, डजंट मैटर, एवरी डॉग हैज हिज डे। आज बड़ी ऐश कर रहे हो ना, पर जिस दिन वो फाइल फ्लोट अप कर गई ना, फिर देखो क्या हालत होती है। क्यों? हर चीज का एक समा होता है। देयर इज अ टाइम, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी which floats into the Brahmand and comes back as a boomerang. This is the law. So this is very, very important to understand about the laws of cause and effect. Very thin line है between this action and reaction. जो action होगा उसका reaction होगा। अब जो cause है वो action है, और वो action कौन सा है? unseen actions. मैंने पहले भी कराया हुआ है। कॉज इज इन द मन, मन किसी को नजर नहीं आता, पर वो एक्शन तो कर रहे हैं। वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं? अनसीन, अदृश्यमान कर्म, द कॉज। और जो नजर आ रहा है, जो इफेक्ट है, जो उसका रिजल्ट है, जो हमको नजर आ रहा है, बेशक वो शारीरिक रोग हो या कोई कौड़े में रिश्ते हो या कोई डाउनफॉल हो, कोई unpleasant situation ho, that is what it is, the effect. That is the seen karma, or we call it the drishtman karma, all interlinked. तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि why we have to understand the cause and the effect. Now, अगर हम ये सोच लें कि भाई cause and effect का हो रहा है, why these files float in the subconscious mind? You have understood very, very clearly that this is the manifestation. Now, when we are understanding, when we are trying to understand what are the principles of cause and effect, the principles, we have to understand the principle. इसके चार हैं. First is duty. उस ड्यूटी में क्या है? अब देखोगे कि ड्यूटी जब हमारा, सबसे पहले ड्यूटी है, we have to prioritize. जैसे एग्जाम्पल, जब अगर मैं घर पे हूं और बहुत तकलीफ है, बुखार तेज चढ़ा, नॉट फीलिंग वेल, किसी का मेरे को फोन आता है कि भाई आई नीड कंपनी, आई एम ऑल अलोन, प्लीज कम, आई एम ऑल अलोन। अब उस टाइम क्या होगा? या तो मैं उसी हालत में चली जाऊंगी या तो मैं नहीं जाऊंगी। अब मेरे को यहाँ पे सोचना है, टू प्रायोरिटाइज माई ड्यूटी। I have to prioritize my duty कि मैं आराम करूं, rather than going there, I have to prioritize कि पहले मैंने अपनी हेल्थ देखनी है। अब फ्लाइट में जाते ना तो कहते हैं ना कि प्लीज पुट द मास्क योरसेल्फ बिफोर यू पुट इट टू द चाइल्ड और टू द नेक्स्ट नेबर। पहले अपने आप पे ध्यान रखो कि you have to first look after, you have a duty towards your own self before you apply this duty to others. So prioritize it. It is our duty that हम पहले अपने आप पे देखें, अपना mental health को देखें. It is our duty. This is our priority in life. और spirituality says, जब तक हम अपना ही नहीं पहले देखेंगे, हम दूसरों का कुछ भला नहीं कर सकते. When we are in a soup, how can we help anyone else? If I am wounded, how can I help anyone else? और तकरीबन यही हो रहा है. We want to heal. हमने सबको heal करना, heal करो. No, first heal yourself. वो जो cause है अंदर, उसको पहले ठीक करो.
So we have a duty towards ourselves, and that is supposed to be our priority. Then comes the second. It says ego. हौमे दीर्घ रोग है. We are always living in a world. हम ऐसे एक दुनिया में रह रहे, खाली मैं. मुझे मेरा अपना सारा कुछ पता है, मेरी जीवनी का पता है, मेरे खाने पीने का पता है, मेरे बच्चों का पता है. मैं बस इसी में रहती हूँ. So what happened in the Karma Yoga? This is the 4 big pillars of the Karma Yoga. Yoga means union with the oneness. कौन से ऐसे कर्म करें that you unite with the oneness? So first was your duty. The second is eradicating your ego. ये जो हमारा ego है ना, ये ही सबसे बड़ा रोग है. And हमारा ego है कौन सा? The body conscious. It is a body conscious. हम ये body conscious में रह के इतना बड़ा ego पाला हुआ हमने, ताकि हम अपने actual identity को भूल चुके हैं. So what happens when we have to get in union with the oneness, or we get into the Karma Yoga? This is one of the biggest second principle which we have to follow, where we have to find our own image. हम है कौन? Who am I? जब तक हमको नहीं पता लगेगा, हम कर्म योग नहीं कर सकते, हम union with the oneness नहीं कर सकते. तो कर्म योगा means that you are uniting with the oneness. अपने एक के साथ आप जुड़ रहे हो. You're getting married to your Pritam. Another word. You're uniting with your own identity mantra जो स्वरूप है. You're uniting with the oneness. You're uniting with the soul conscious. वो तब भी हो सकेगा जब हम हमारे अंदर का जो हौमे है, जो ईगो है, अगर वो टूटेगी, तभी तो हमारा उसके साथ यूनियन हो सकता है, कर्म योग हो सकता है. बट ये ईगो है क्या? शरीर, बॉडी कॉन्शियस. ये शरीर है तो पूरा परिवार है. ये शरीर है तो धन दौलत पैसा सब कुछ है. ये शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है. पर ये नहीं कि हमने शरीर को त्याग देना है. नो, वी हैव टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियस. हमको इस हौमे से निकलना पड़ेगा. सबसे बड़ी कूड़ की पाल यही है जिससे हमको निकलना पड़ेगा. और निकलने के लिए क्या? खाली अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाओ. ये है कर्म योग. और कर्म योग के लिए व्हाट हैव वी टू डू? ये जो ईगो है ना, दिस इज द कॉज. दिस इज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग. ये कारण किस चीज का है? जो सफर कर रहे हैं ना हम लोग, जो हम एक से टूटे हुए हैं ना, उसका जो ये कारण है, इसका कारण क्या है? ये ईगो जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है. और किस चीज का हौमे है? इस शरीर. हौमे शरीर है, बॉडी कॉन्शियस. तो शरीर से मुक्त नहीं होना है, शरीर से ऊपर राइज करना है, जहां पे खाली हमने अपने आप को उस एक के साथ यूनियन करना है. कर्म योग, यूनियन. बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आवर ईगो. Now, if we think this is the Karma Yoga, then what is the third pillar? For Karma Yoga, what is the third pillar? Attachment. ये जो attachment है ना, what do we do with the attachment? It blocks our Karma Yoga, our union with the oneness. Why? Attachment इतना है, मोह इतना है, बच्चों के साथ, पैसों के साथ, शौहरत के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, हर चीज के साथ हमें एक मोह है. ये नहीं कि हमको मोह होना नहीं चाहिए, मोह है. मोह है तो बच्चों के साथ हम बच्चों को पाल सकते हैं. We cannot bring up our children without attachment. बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने जोगे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वो मोह से निकलते हैं. और ये थोड़ी देर 5 मिनट वहीं पे लगा रहता है. हमारा अटैचमेंट इज टू द चिल्ड्रन, टू अ पीपल, टू अ हस्बैंड, टू अ फैमिली, टू द मनी. अटैचमेंट हो जाती है. हम उसमें से नहीं निकल पाते और हम सोचते हैं कि नाउ दे आर ऑल आवर प्रॉपर्टी. कौन है हमारी प्रॉपर्टी? बच्चे हमारी प्रॉपर्टी, हमारे सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर वाला भी मेरा प्रॉपर्टी है, आदमी बोलते मेरी वाइफ प्रॉपर्टी. एवरीवन इज सिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन अटैचमेंट. एक बंधन हो गया. उस बंधन की वजह से दुख ही दुख है. और जब दुख है, यू कैन नॉट यूनाइट विद द वननेस. आप
योग नहीं कर सकोगे, यूनियन नहीं हो सकेगा। क्यों? कॉज बहुत गलत है। कॉज क्या था? कारण क्या था? अटैचमेंट। पहले ईगो, अब अटैचमेंट आ गई। अब ये अटैचमेंट हमको यूनाइट ही नहीं होने दे रहा है। नोट करके देख लो, बड़ी बार लोग कह देते हैं जी हम सब कुछ कर सकते, पर हमारा जो मोह है ना अपने बच्चों से, हम यहां से नहीं निकल सकते। खाली बच्चे नहीं बेटा, पैसों का मोह, शोहरत का मोह, फैमिली का मोह, अपने स्टेटस का मोह, अटैचमेंट कितने बंधनों में है। पर जितना भी ये है, ये हमको उसके साथ यूनाइट नहीं होने देगा, क्योंकि उसके घर में दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। What do we need? We need detachment. हमको क्या चाहिए? Detachment. Now, attachment is what? Attachment is what? अब कहते हैं कि attachment, हमारी जितने भी हमारी attachment है, वो जो है एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। Attachment and detachment. Attachment means love plus hurt plus expectations. 3 चीजें। हम कहते हैं हम प्यार बहुत करते हैं, पर हम उनसे साथ एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं। 9 महीने बच्चे नु पाल के रखे, आज बुढ़ापे भी सन सुट गए। इन्हें इसी दिन नाम से कीता सी। लुक एट द डायलॉग्स, तोल तोल के डायलॉग देते हैं, because we have expectations. Expectations started when the child was in the mother's womb. आज बच्चे जब कुछ कह देती है, पाल पोस के वड्डा कीता सी, थोड़ी जबाना इतनी लंबी हो गई साडे सामने बोलन लग पे, because we think them to be our property, expectations. So attachment is what? पर हम बच्चों से प्यार करते। दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव, दिस इज कंडीशनड लव। ये मोह है प्लस एक्सपेक्टेशंस, और जहां पे भी एक्सपेक्टेशंस होगी वहां पे हर्ट आएगा। या दिस इज अटैचमेंट, ये है मोह। दिस इज द कॉज, ये ही कॉज है हमारे सारे संसार का दुख। नॉट ओनली ईगो, ईगो भी राइजेस फ्रॉम अटैचमेंट। ये मेरा 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 मेरा, ये तो करते हैं हम लोग, मैं और मेरा। तो ये सारे जितने भी कॉज हैं, दे डोंट लेट अस यूनाइट विद द वननेस। हमको कर्म योग नहीं होने देते, हम उसके साथ यूनाइट नहीं हो पाते हैं। हम बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस नहीं जा सकते हैं। वी कैन नॉट गो टू विच प्लेस? टू आवर आइडेंटिटी। मानो तो ज्योत स्वरूप है, नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि कर्म योग में this is the third principle that does not allow. Now, what is the fourth? Expectations. Now, these are the expectations what? कि बच्चे बड़े होंगे, हमको संभालेंगे, बच्चे हमारी इज्जत करें, जितनी दुनिया है आगे पीछे सब मेरी बात सुने, जो मैं कहती हूँ वही माने। एक्सपेक्टेशंस है। लड़ाई झगड़े पड़ते कहां से हैं? मैंने जो बोला मैं ठीक बोला, तुमने गलत बोला। लड़ाइयां झगड़े यहीं पे होती हैं। Let it be in families, let it be in the schools, let it be in the offices, let it be in the gurdwara, let it be between the pracharak. Expectation कि मैं सही तो गलत, मैं ही ठेकेदार है। Because expectations हैं। Remove your expectations. When you remove expectation, you become detached. मोह तो निकल आओगे। मैंने अटैचमेंट का फॉर्मूला आपको दिया। अटैचमेंट इक्वल्स टू 2 दिन पहले खाया था। condition love plus expectations plus hurt. Now, what is detachment? Detachment is what? Love, unconditional love. Plus what? No expectations. No expectations. Minus hurt. That means detachment means minus expectations, minus hurt, but unconditional love. This is the unconditional love. अब ये ही है हमारा फोर्थ पिलर फॉर द कर्म योग। ये जो 4 चीजें, ये द कॉज, ये सारे कॉज हैं जो हमको एक के साथ मिलने नहीं देते। एक्सपेक्टेशंस, attachment, our ego, these are all our
व्हाट यू कैन से कि हमारे अंदर का जो हमको एक के साथ मिलाप नहीं होने दे रहा. डोंट वी वांट, आरंट वी लर्निंग? आज हम क्या कर रहे हैं? आज मेंटल हेल्थ में क्या करें? सीधे अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अपने मन को एकदम टोटल ब्लिस में लेके आ रहे हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली नॉट ओनली मेकिंग आवर व्हाट यू कैन से, हम खाली इस चीज को खाली यू कैन से मेंटल हेल्थ ठीक नहीं करें, समवेयर वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स सोल कॉन्शियस. कहीं ना कहीं हम उसको ट्रैवल कर रहे हैं सोल कॉन्शियस में. सो नाउ व्हाट हैव वी टू डू? We have to understand that now as we are going towards this period, we have to now 4 principles you have to isko palle ban lo. Causes of not uniting with the oneness, not uniting with the उसके साथ जो एक हमारे अंदर बैठा है, एक जो मन तो जो शुरू है. What does not allow us? What allow us? It is our priorities of life. Second, ego does not allow. These are the cause. ये कारण है. And third is what? Our attachments. ये बंधन, ये मोह. And fourth is what? Our expectations. Now, अगर आपको ये चीजें 4, प्लीज इसको समझो. Whenever you get the recording, please listen. ये चारों cause हैं. For what? जो बाहर के कारण, जो इफेक्ट है, जो उसका जो नतीजा निकल रहा है, जो दुख 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 आ रहा है, वो इन्हीं कारण की वजह से है. सो नाउ यू टू अंडरस्टैंड कि अगर द बेनिफिट्स ऑफ कर्म योग, अब उसका जो बेनिफिट क्या है, फिर अगर हम कर्म योग करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? हम कहते हैं आज से हम अपना कर्म योग, वी वांट टू नाउ यूनाइट विद द वननेस. हमने अब ये तय कर लिया, हमने अपनी यूनाइट करना है. तो जब हमने वो जो 4 किए थे ना, द पिलर्स, द कॉजेस, अब हम देखेंगे कि हम जब यूनाइट करते हैं उस एक के साथ, तो व्हाट हैपेंस? वी आर टोटली ब्रेकिंग आवर ईगोस. अब बोलो कि ईगो भी रखो, और वो एक के साथ तो नहीं हो सकता है. एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. हमें नावे नाल विरोध है. जो हमारी हमें है ना, वो विरोध है, एक जगह नहीं बैठेंगे. So when now we have planned कि yes we have to now unite, हमने कर्म योग करना, we have to get into the thing. So what happened? We have to break our egos. हमको हमें से मुक्त होना पड़ेगा. हमें से मुक्त होना is not easy. इतना सूक्ष्म है, पता ही नहीं लगता कब वो अंतर कर जाता है. क्योंकि एक टूटता है तो दूसरा ईगो, दूसरा टूटा तो तीसरा ईगो, बार बार they are changing. So what happened? First thing, when we are now want to unite with the oneness, we are breaking our ego. बेनिफिट आ गया ना. अगर वैसे हम बोले कि हमने we want to break our ego, नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम कहें हमने उस एक के साथ मिलन करना है, तो देयर बिकम इजी फॉर अस. तो मिलन करने के लिए सबसे पहले तो ईगो को तोड़ना पड़ेगा. हमको बॉडी कॉन्शियस, बिकॉज बॉडी कॉन्शियस इज ईगो. हमने उस ईगो से निकल के आना है. यू हैव टू राइज. वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है. लर्न टू लव योरसेल्फ. व्हेन यू लर्न टू लव योरसेल्फ, देन यू लर्न टू लव अदर्स. सो व्हाट हैपेंड? दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड, बिकॉज हमने एक के साथ जोड़ना है. जब हमने देखा कि ईगो भी हो गया, देन वी विल लाइक टू अंडरस्टैंड हमारी भी ड्यूटीज क्या है. व्हाट इज आवर रोल? We have all our duties and responsibilities, but we mix up duties, our responsibilities. But what do we mix it up? हम लोग मिक्स कर देते हैं. हम कहते हैं कि attachment and responsibility को we are misinterpreting it. For example, हम लोग बैठे हैं किसी सत्संग में. ओके, सत्संग जो है हमने जाना है, तो मैं कहती हूँ चलो बच्चों को आने का टाइम है, फिर सत्संग पे भी जाना है. अब बच्चे बड़े हैं, अभी वो क्लास 10th 12th में है, बच्चे आएंगे, मेड्स हैं. मैंने उनको खाना बोला कि ऐसा है कि आज शी विल गिव यू द रोटी, और आपने कुछ भी मंगाना है बेशक मंगा लेना, आज मैंने सत्संग पे जाना है. अब चले जाते हैं. अब बड़ी बार लोग कहते हाय
सत्संग ते चले जाओ, बच्चे सोदे साडे भुखे बैठे हुए हैं, असी उत्ते छोड़ दिता। ये थोड़ी है कि इत्थे साडी रिस्पांसिबिलिटी है। Our responsibility is there, but your priority is there also. कि आज मैं अगर सत्संग में जाती हूँ, I learn how to become stable, how to handle my life more beautifully, how to eradicate my diseases, how to bring happiness into the family. मैं वहां से वो जाके सीखती हूँ। बट मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चों का। बच्चे बड़े हैं, दे आर बिग इनफ, वो शुक्र करेंगे माँ गई, आज ते बर्गर मंगावांगे, वो तो शुक्र कर रहे हैं। बट ਅਸੀਂ कहते हाय नहीं जी, हाय शोदे साडे बच्चे, साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चों दी, so we are mixing it up. This is not responsibility, this is the attachment. This is the attachment. There was a time when we all used to sit on the table. We were at least about 15 of us sitting on the table. My father-in-law used to tell me, please फुलके सारे बना के टेबल पे रख दो, and I want the whole family to sit there around. सारे बैठेंगे, जोड़ियां बैठेंगी, husband wife. We were 5 daughter-in-laws. Husband wife बैठेंगे, and the head of the table my father-in-law to sit. सारे इकट्ठे मिलके रोटी खाएंगे। हम देखा जाए जेरी रोटी अंदर पाई है, आफ्टर ऑल कैसरोल पाया, थोड़ा तो ठंडा हो गया सी ना, गरम गरम बनाए, बट थोड़ा तो देगा। हुण इधर दो तरीके सोचन दा, हाय क्यों शोदी मर्द बाहरों आए, गरम गरम फुलके देने चाहिए है कि। This is what responsibility or attachment? या father-in-law says सारे बैठो इकट्ठे on the table, husband wife all sit, no discrimination, सारे इकट्ठे बैठो तो रोटी खाओ। Which one will you prefer? Now that is your own mind state. In the beginning we used to say, हाय एक केरा तरीका है, गरम गरम फुलके नहीं, ते आदमी सारे इकट्ठे बैठो। But then we slowly learned that he was trying to bring us the discrimination between the husband and wife. He wanted all the children to sit on the table and have the food together. So that means it was his detachment. He was rising above the body conscious. So we have to learn that when we people are practicing these things, we have to on the duties, then we have to get out of these attachments, because to have the union with the oneness, some detach hona pega. We have to detach. To get union with the oneness, we have to make a difference between attachment and responsibilities. To get in union with the oneness, karma yoga karna pega, so we have to get away with the egos. This is the benefit of karma yoga. Now, if I ask you a question, can we escape from this law of cause and effect? Can you please write? Can we escape from this law of cause and effect? Please write in the chat box. Never, okay? Anyone else? No. Absolutely right. Someone said yes. Yeah, Sundarjit Singh said yes. No, you cannot. The law of the universe atal hai, aad sach, jugad sach, hai bhi sach hai. ये अटल है, इस तो असी बच नहीं सकते, जो बीजोगे वो तुहानू खाना ही पेगा। ये लॉ है, जो भी द कॉज द इफेक्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, असी बच नहीं सकते हैं। दिस लॉ सेज यू गो एनीवेयर इनटू द यूनिवर्स, जितने भी ब्रह्मांड में चले जाओ, आई विल फॉलो यू, दिस लॉ से। सो यू कैन नॉट, यू जस्ट कैनॉट गो अवे विद दिस लॉ। Is karma a form of justice? Please write in the chat box. Is karma a form of justice? Is karma a form of justice? Yes, it is. And it is a supernatural justice. एक कोई man-made नहीं हैगा। Man-made जितने भी laws हैं ना, सी पहले भी चेक कर देता सी। What did we say? कि जितने भी man-made laws हैं, of the country, of the people, of the court, everything changes with time, and it is made by man. But these laws will not change. A laws atal hain, they are going to play 24/7. We do not know when we are going to be trapped.
Why? Because law ही ईश्वर है. Law is God. तो God does not change. वो तो अटल है. वो तो सच है. He's immortal. He's always prevailing. वो कण कण दे विच है. So the law is also working 24/7 round the clock. So you have to understand this. Law is very, very important to understand for your mental health. Now, in the end, I will say, I would like Rimple to take the next slide. What are we going to take away home? What are we going to take away home? Is it homework for you, Hanji? Hanji, Rimple ji. Yeah, thank you, Burji. आपने जो आज हमें ये cause and effect समझाया, it is again and again, we have to drill in our mind. काम कर रहे हैं. And I request someone, please mute yourself. And Baljeet ma'am, you are co-host. You can help the audience to get mute. So right now, yes, we all, I think, understood कि we have to take our own responsibility. Okay. So responsibility means like giving education. I'll say taking education also. What we guys are doing right now. ये भी हमारे लिए एक सबसे बड़ा टेक अवे है जो हम सब कर रहे हैं. Like for my children, हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बुआ जी ने हमें समझाया कि हमें उनको फीड करना है. छोटा बच्चा है तो ठीक है, उनको वैल्यू सिखानी है. ठीक है, वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट. बट हम क्या करते हैं सारी जिंदगी? अटैचमेंट, मेरा बच्चा, माय चाइल्ड, दिस वे ओनली. हेलीकॉप्टर पेरेंट बन जाते हैं, गिरने से पहले उठा लेते हैं. पांडा पेरेंट्स बन जाते हैं, बुलडोजर जैसे पहले पूरा सफाई कर देते कि मेरे बच्चे को लगे ना. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस क्योंकि बुआ जी ने पेरेंटिंग में ये हमें एक एक पेरेंट स्टाइल अच्छी तरह से हमें समझाया हुआ है. और जिन्होंने नहीं, आप हमारे जीवन जात में पेरेंटिंग का पूरा सीरीज देख सकते हो. सो हाउ ब्यूटीफुली शी एक्सप्लेन कि हम ही कंडे बीचते हैं उनके लिए, है ना. पूरी जिंदगी का ठेका हम उठा लेते हैं. फिर क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस होती है और फिर हमें हर्ट होता है. तो हमें क्या करना है? हमें जैसे एनिमल्स हमने देखा है सबने, एनिमल्स अलाउ देयर बेबीज टू ग्रो, राइट. वो पूरा ठेका नहीं उठाते हैं. दे गेट डिटैच. वी शुड लर्न फ्रॉम देम ओनली. 1 साल भर उड़ जा. और हम क्या करते टिल द एज, जब तक मैं जिंदा हूँ 80-90 में उसको पकड़ के बैठ जाती हूँ, मेरा बच्चा दूर ना जाए, जिसकी वजह से हमें सबको हर्ट होता है. ये तभी तो बुआ जी बार बार हमें डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट, मतलब ये नहीं कि दूर हो जाना, नहीं, प्यार करना बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना, फ्लोलेस, गो विद फ्लो. पर हमें प्रैक्टिस करनी है. अब बोलोगे रिम्पल मैम बातें करनी बड़ी आसान है, अपने पे बीतेगी. यस, मैं ये नहीं बोल रही कि एक दिन में हो जाएगा, बट वी नीड टू प्रैक्टिस. बट आई कैन वाउच कि ये हो सकता है. पूजी करके जो भी है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम बुआ जी, फ्रॉम दिस लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हमें सबको क्या टेक अवे लेके जाना है? गिव 100% while doing any action, कर्मा और ड्यूटी. हमें बहुत अच्छी तरह बुआ जी ने भी अनसीन कर्मा, सीन कर्मा की, जो हम बोलते थे बुआ जी हमने तो इतना अच्छा किया, हमारे साथ बुरा किया. बुआ जी वो लोग तो बुरा करते हैं, उनके साथ फिर भी अच्छा होता है. तो आज उन्होंने पहले ही ये हमको समझाया कि कहीं ना कहीं कर्मा, कहीं ना कहीं सीड उनके सो किए, वो उनकी फाइल्स ऊपर आ गई, वो है. पर ये मत सोचना कि उनको वो फल नहीं देना पड़ेगा. जैसे उनकी फाइल ऊपर आई सबकॉन्शियस माइंड से, उनको भी फ्रूट तो मिलना ही मिलना है. तो ये जो थॉट प्रोसेस हमारे भी था. थैंक यू बुआ जी. हमें हमेशा ये लगता था कि दूसरे इतना बुरा करते हैं, बुआ जी उनके साथ क्यों अच्छा होता है, जब हम तो हमेशा अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा क्यों होता है. सो थैंक यू, टुडे वी रियली अंडरस्टूड वेरी वेल. कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मा सीड है जो हमने सो किए, और फ्रूट तो मिलना. भाई रेडी हो जा, पोस्टमैन लेटर देने आया है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेड योर ईगो, है ना. मेरे में ईगो थी ना, मैं कैसे गलत हो सकती? नहीं रिम्पल कौर, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. कहीं ना कहीं अभी एक्सेप्ट कर ले, तूने सीड बोया है, तुझे फल देने आया है कोई ना कोई, और उसको तू एक्सेप्ट कर ले. कबीर साहब कहते हैं ना, निंदो निंदो मुको निंदो. क्यों कहते हैं? बिकॉज मुझे पोस्टमैन लेटर देने आया है. नो अटैचमेंट. This is to really, I'm really practicing बुआ जी, and I'm getting the results. I'm sure we all are working, है ना. क्योंकि हम बहुत इस चीज में इतना ट्रैप हो गए थे, और थैंक गॉड हमें बुजी ने अपने सेशन से निकाला कि कैसे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी अगर तो हर्ट करनी होना चाहती हैं. एंड आई एम श्योर हमारे जीवन जब सारा काम कर रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल एबल टू हैंडल इट. सो ये था आज कॉज एंड इफेक्ट का. एनी क्वेश्चंस स्पेशली फॉर दिस law of cause and effect, जब कुछ भी है, you are free to ask. Today's session will little extend because today is mental health day we are celebrating.
सुबह जी रिम्पल जी, हाय गुड इसमें क्वेश्चन मॉर्निंग। था हाँ इसमें जी चैट बॉक्स में, वो आप ले सकते हो। हाउ टू कंट्रोल एक्सपेक्टेशंस बुआ जी सी पूरी जिंदगी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ but we have to understand कि by expectation we are spoiling the whole game पहले we have to understand what नुकसान we are doing by expectation कल ਅਸੀਂ एक्सपेक्ट करेंगे ना तो सोचेंगे ਹੁਣ एक्सपेक्ट ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਓ एक्सपेक्ट ਕੀਤਾ everything goes down the drain for expecting for example I've done something very nice to a person and I expect कि भाई एटली मेरी वाह ते करे मेरे अप्रीशिएट ते करे मैं अज उसनु घर बुलाया मैं 4 चीज़ां रखियां एक बारी खाओगे दूसरी बारी खाओगे तीसरी बार जब दूसरे जाओगे तो 2 चीज़ां रखनी क्यों मैं ते 4 रखियां सन उसने 2 रखियां सन expectations are going to come so what happened जेड़ा तुसी कीता भी सी ना ओ भी खो खाते do minus expectations is going to spoil the whole game is going to bring hurt सबसे वड्डा गल है hurt we expect from our children we expect from our husband we expect उसके साथ जोड़ लो जहां पे भी expectations आएगी जोड़ लो hurt do you want to be hurt you want happiness you want bliss you want to be in चढ़ती कला don't you want to be in connected to the union with the oneness हम कर्म योग कर रहे हैं ना तो कर्म योग अगर अपने करना अगर अपने प्रीतम को मिलना है तो एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन की तो हर्ट एंड यू ब्रेक फ्रॉम द वननेस you break from the oneness ਅਸੀਂ ਸਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ a purpose in life so just keep this in your mind that whatever I am doing no expectation or kare na kare I am doing for myself I am doing for my evolution अगर आज मैं किसी को माफ कर दी है माफी मांग दी है मैं अपने वास्ते मांग रही हूं मैं अगले वास्ते नहीं मांग रही हूं अगर आज मैं किसी अपने बुजुर्ग की सेवा कर रही हूं तो मैं अपने वास्ते कर रही हूं मैं अपनी खुशी वास्ते कर रही हूं मैं अपनी एवोल्यूशन वास्ते कर रही हूं आई एम नॉट डूइंग फॉर एनीवन so this you have to keep on talking to yourself affirm to yourself कोई भी कर्म करते हो कोई भी कर्म करते हो just see कि मेरे कॉज दे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन आई तो समझो गए काम से बुआ जी कैसे शी इज देयर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस सो हर क्वेश्चन इज कि मैं उसको कैसे कंट्रोल कर लूं इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है व्हाट शी शुड डू यू नो see what happens you have to become very alert become aware okay आप जब किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो कोई हेल्प भी कर रहे हो या किसी के साथ मीठा भी बोल रहे हो ये मन पे रख लेना कि अगर किसी ने आपको दुख दिया है आपको तो यही एक्सपेक्ट होगा ना कि वो मेरे को दुख ना दे क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया है पर मैंने इतना अच्छा किया है पर वो मेरे को दुख दे रहा है दैट मीन मेरे को एक्सपेक्टेशन है bring in a vision to see that that person is a postman the cause is here and that is the effect hanji बोलो Excuse me. It's like my question is like emotions are really natural. If we don't have emotions, we are not good human beings. We have emotions and we attach to others because if somebody is not attaching to other, how come they can understand their situations? So attachment, it's there is attachment and there is expectations. If there are no expectations but there are emotions, because to understand emotions are really important. If the expectations are going to end, like I'm not expecting anything, but my emotions are I really want to understand the situation of the others, because if I'm not going to understand, how come I solve those? To understand, it's really important to have emotions in the heart and to understand the feeling of the others in their shoe.
So when we try to understand the emotions of the others, but we are not trying to get those emotions, then how to get that? How can I understand those emotions? I'm not, it's like my question is not, I'm not expecting anything. I don't want anything to in return back. But yes, of course, everybody wants like some emotion, some love in back. So expectations are just like I am trying to understand the situations. I'm trying to understand what is going on around everything, but I'm not expecting anything, but I'm trying to understand. So how we differentiate both those, like those are not expectations, but those are to understand the situations, you know? So what How happens? Yes, yes. first you have to understand your own emotions. Before trying to understand the people's emotions, you first have to understand your own emotions. That is why you're so confused. You're so confused that you want to understand the other people's emotions. Okay? Now, first, but you understand your own emotions and Is clear up it your own because emotions. it is because like sometimes we are so empty because we spend a lots of time, like lots of time just with yourself, and nobody was there to support you, nobody understands you, and that is like something that really hurting you. And you try to understand, I'm trying to understand, just because I feel if nobody understands you, how does it feel? It feels so hard. And Mm. it's be like there was a time when nobody was understanding me, but right now I can understand others. I want to understand their pain, and I really want to understand to give them some solutions because it happened with me, or I don't want to it happen with others. Because when somebody use you and throws you, it's like really hurting. It's deep down, it's like really deep, and it gives you wounds. So when you have wounds in by your own, but you don't want those wounds to others, so you wanna protect the emotions of the others. It's be like when I saw kids, it's like right now I'm at USA. So whenever I saw kids, I always like feel like I think we should hide them because the society, they don't understand it. They are pure right now, they are so pure, but they are gonna mix up in the society and they will be so distracted from the path. And unless or until they come to know about everything, they would be wounded, and there would be so much pain in their heart. So they were so afraid to accept others. Sometimes, like right now, I'm confident enough to communicate, but there was a time before I was so distracted. I couldn't even communicate with somebody. I was so afraid to communicate because I was criticized on every point. It's be like, no, you are doing wrong thing. No, you don't know how to do it. No, this is not the way how we perform the duties. It's be like, no, you don't know. It's like we are going to teach you, but when they taught me, if there is something wrong and I arises the question, no, it's not good, you are doing wrong, and they'll be like, you don't know about it. Mm. So what is that? So, bache, this is what happens, no? That first, so you have to, bache, heal yourself. Don't try to heal. Gurmat does not tell us to heal anyone. Gurmat tells us, heal yourself. Apne apnu sawaro. Now you know that you have been criticized, all these things have been come and you've been wounded, the loneliness, everything you have gone through the pain. Okay. Now you heal yourself. You may have healed also yourself, or you are healing, whatever it is. You heal yourself. How? With the help of knowledge. Today, whatever we are talking is just sharing the knowledge. You're sharing the Yes. knowledge. That it is the man. This is the main place where you can say the recording is in, the programming is going. This is the main place where everything is going to be manifested. So
I am going to take in charge. I've got the knowledge, I've come to know my mechanism. So मैंने पहले अपने आप को संवारना है. I'm going to look at myself before I see others. You heal, the world is healed. You change, the world changes. At least trust the universe. This is the knowledge. So now you taking charge of your own and you start healing. When you are healing yourself with the help of the knowledge, then whatever people have been telling me, maybe it was their story. It was not my story. I took it personally. And for example, maybe if I check, it was me and they were criticizing me. Maybe these are what? These are all the postmen that came and gave you the letters. They're just like a postman come and give you the letter, because what you sow, so shall you reap. This is the law of the universe. These are all what? The communication. These are the correspondence. These are the compensation. This is the cause and the effect. So you're using the knowledge and you're introspecting yourself and you're checking your super conscious mind where all the programming is going. So when you are using this, you're somewhere rewiring the things. You're reprogramming because you are living with that hurt. People have been telling, enabling you, and all these hurts are there. Now you are just reprogramming it and you're removing the dirt with the new wisdom, with the new knowledge. So the programming is, okay, it must have been their story. I took it personally. And if it is what so, this is what I sow, so shall I reap. I am responsible for it because I'm the cause and they are the effect. So this is what slowly, your subconscious mind is now being reprogrammed. Your energy starts rising. Now the energy rises because the energy was depleted, loneliness. Now it is rising and becoming a warrior. Because now you are facing, we have never learned to face our own vices. You are now learned to face your vices. Now when you have faced your vices, what happened? You're becoming a warrior. How are you becoming a warrior? Because the vices are there and you're using the Guru's Gyan. You're using all acceptance. Your total surrender. Now you're stopping the blame game. You're taking total in charge and no more judgments. You're taking the responsibility. So what are these are all the virtues. So you're taking the virtues of the oneness and the Guru's Gyan and you're reprogramming it. So your energy is increasing. Now, मन के ऊपर क्या बैठा हुआ था पहले? राजा कौन था? हौमे. Why people are judging me? Home was the king of the Raja, of the man. अब ये खिसक गया, इसको हटा दिया because reprogramming हुई. Who came and sat down? The energy of the oneness. Who is the Raja? One. I am that I am. Now, when I am that I am, you are totally healed. When you're totally healed, do you know where you reach? Your body is going to ooze out all that energy. 24/7, the body oozes out an energy which is in the subconscious mind. Pehle kya tha? Hurt. It was all the other programming and it was giving and it was attracting. Giving, it was attracting because what you give, you attract. That is strong. Now, when you reprogram, then what about your energy increases? Raja ban gaya, ik, and then ik ban gaya, then oozing out what? The energy of the oneness. Now you ooze out, you attract. What you give, you get back. You give love, you get love. You give bitterness, you get bitterness. So what are you giving? Now you're giving the energy of the oneness. You are in Chardikla, you are in bliss, you are in Vikas, the whole energy goes out. And log mannan ya na mannan, they don't agree. But your vision changes. You have an empathy. Oh, sorry. They're all wounded. These people are all wounded. All are on the same line where I was. So you do an ardas. You do a blessing. Ki God, please, this knowledge should dawn on these people because all are on the same rat race. All are fighting their own this thing. So you see what has happened? You took charge of yourself. You fixed yourself only. Yes. So he says, the Guru says, only fix yourself. Aap savare, main mile sukh hoy farida, je tu mera hoy re, sab jagat tera hoy. So don't take the responsibility. When this vision will come, you will have so much of spiritual empathy that you are going to attract. You're going to attract such situations, such people. You will see the world starts changing. आपने किया कुछ भी नहीं, आपने अपने आप को संवारा, अपने आप को change किया. Do not try to change anyone. You will be very badly wounded. And when you change, your children around, they are also sucking that energy.
slowly you will see the atmosphere becomes very different, environment becomes very different. Your talks are going to become very different. You are just pouring out love. You are pouring out of the discrimination, no product between anyone. You don't make anyone as an enemy or a foe. No, that vision has, Mhm. that energy your children will suck, the people around you will suck. All of a sudden you will see the world changes. This is the Is beauty. that true? Is that true that our subconscious mind it develops at the time even when we are in the womb of the mother? Like right now, it's like subconscious mind is there. So my Yes. conscious mind, it's like I learned this thing from a class. Like my subconscious mind is just a security guard. So we just go to the security guard and we come back. But there is subconscious mind. So is that true that the Yes. subconscious mind, my subconscious mind, Now I'll it put it in frames a very its different and a own? very easy way. When the child is in the mother's womb, okay, many people say जी जब बच्चा पैदा होता है फिर 3 महीने के बाद मन आता है मन जा, no, the man is already integrated into the child when he's in the mother's womb. Now what does it play? For example, the mother's mind state is not good. There are fights in the house. Just as the mother feeds the baby in the mother's womb through the placenta, so also the mother's mind, uska jo man hai, is giving energy. The environment outside Yes. all energy. That energy, the baby sucks it. So the subconscious mind is already programmed. At times we say, "Haji bachcha hoya hai, pata nahi kyun itna ladaka hai, bhai wo itna kyun डांटा है गावे?" Actually, he sucked in all the energy from the time he was in the mother's womb. So you can imagine the journey had started from there. We had no idea, nor did our parents, nor did we have. Now, when we come to know, we have got files over files in our subconscious mind, which now we have to eradicate it with this knowledge, with the Guru's Gyan, and with all the virtues and values of the oneness which is already inside us. We are. I am that I am. Mana tu Jot Swarup hai. I am that Ikunkar. I am the walking, talking God. I am the warrior. I can break, I can sustain, I can create, I can destroy. This is the power I have. Yes. Like when someone, like right now, I'm just talking about myself because I can't experience the others. Oh, what happens to me right now? It's be like I just want to understand the whole situation. It's be like I know there is a power behind. I can feel the power because when there is a power, you can feel it. You if you have that vision, yes, because the beauty always lie in the eyes of the beholder. So when you start seeing the vision, I know that there is a power. I know that power is not going let me down at any condition. So that power gives me the indications that y- yes, I am there. Just do whatever you want to. Because like from very beginning, maybe that was my journey. I was just at a place to learn the things. That's what I'm feeling right now. I was at the place to learn some things, but the what I was there to learn that was not fulfilled because there the things was not exactly it was expected because when the child born, so parents expect something, they send their child to schools, to college, to universities to learn the things. But what if the school fails sometime, like it's not 100% guaranteed the school is going to be passed. Yes, my school fails, so it's like the parents know that the school fails, so they took the responsibility, so they create everything in form of school, everything, your work, your home, your roads, wherever you go, they just form everything in a form of school. It's be like this was what we expect you to learn, but with some conditions, with some mindsets, or with some conditions, your teachers, those were distracted with some things because
When somebody saw the things, they got distracted. It's human nature. It's not fault, but it's human nature. So, is it right? My question is just like, is it right that if one school fails, so the parents they created the second school? See what happens? We parents and all are actually thinking we impose everything on our children according to what we want. We have never let the children grow. We have never let the children grow. Everywhere, this study, this place to work, this is the thing, everything we have got it done systematically. But we have never let the child grow, be a create anything in life. This is where we are hampering our children. This is where we are hampering our children. If we have put very good values, if our EQs of the mother and the father is very good and high, that means man ki sthiti, our subconscious mind is beautifully programmed. You have won more than 60 to 70% of your battle. Because the children will suck that. They will suck that. They are going to carry that type of a frame mind of this. Then wherever they go. Second thing, if your EQ is very high, you will never put all these benchmarks, ये कहाँ करना है, तुमने ये पढ़ना है, तुमने ये करना है, तुमने डॉक्टर बनना है, आपने ये खेल खेलनी है. No, let the children think, become independent, decide for themselves because they are very creative. This is a very beautiful Montessori's. Why did they come? Why did Montessori schools come? Only for this reason. So not only in schools, in the house also we have to create this Montessori also in the house. Let the children become independent. Let the children think. Let the children decide. Which we have just curbed it. We have curbed it because our dreams are being imposed on the children. Yes. Yeah, Manish, you want to say something? Hanji. So can I address a What is very your good first name? question? iPhone? So she spoke about many things. Yeah, am I audible? Yeah, Yes, what's yes. your name actually? iPhone में आपका क्या नाम है आपका? Can you What's your name, Bacha? What's your name? You're asking me? Yes, Yeah. yes. It's Sandeep Kaur. Acha, Sandeep Kaur. Okay. Yes. Yeah, Yes, I would like to address her for, Hmm. yeah, the first thing that he said, that emotions. So how can you be detached and not have emotions? So if you don't have emotions, then then you are not a human being, right? If I got your question right, you asked the Yes. same thing. Yeah. Yes. So see, first we need to understand that where does emotions arise? Okay, so we Hmm. as human beings are not just this physical collection of body. Like Buaji says that हमें जो ego है, that I'm this body consciousness, there is something beyond this body. So if you go deeper, so yoga speaks about 5 koshas. मतलब we are 5 different layers from body to the bliss. Okay, so emotions are the seat of the mind. Okay, so mind is the seat of the emotion. So emotions arises from the mind. So detachment doesn't mean that you become indifferent. Okay, so when Bhuaji says and when I teach that you should be detached, it means you have the right only to your duty. You don't have the right to how the other person responds, whether it is your way, whether it is not your way, whether things are going as per your expectations, whether the things are not going as per your expectations. So when things go your expectations, well and good. If it doesn't go well as per your expectations, then maybe there is some higher reality which is running the show. You have to have this faith. So faith is a very important tool in detachment. I would say that without faith, you cannot detach. That Hmm. I did my best in every situation. I give my best in every relationship, at my work, whether it's my physical health, whether it's a mental health. What can I do? I can just do my duty. Hmm? So you need to understand this very subtle difference between not having emotions. Emotions will be there. We are human beings. We have this mind. Emotions will arise. We will laugh. We will cry. We will feel sad. We will feel happy. That that will be there. But in between that, we have to maintain that balanced state of mind. That is our responsibility. So I would just like to quote few affirmations. So I'm writing a book. The book is known as Activating Your Inner Pharmacy. It is about healing yourself. And in that book, there is a chapter, Winning the War Within. कि हमारे अंदर एक war चल रहा है, उसे हमें जीतना है. So there are a few affirmations that I give to my students. They are very powerful affirmations, and it will help many people get out of depression and get out of this anxiety about what others are thinking about me or whether I should be worried about others.
So one affirmation that I very commonly speak about is that I am responsible for my perception about people and situations. So we don't need to give our remote control to anyone, that others are running your perception. So Nam Simran also speaks about responsibility. First thing, Mm. that I am responsible for my perception also. So how the other person behaves, you have the choice to respond in a certain way, right? So never give away this power of your choice to anyone. So this is the first Mm. affirmation. Secondly, we need to understand. I understand that everyone is different Yes. and our differences makes us unique. Mm. How can you expect others to behave how you want them to be? So we all are different and differences make us unique. That's the beauty of a relationship. And you have to learn to respect. So I learned to respect the differences and Mm. accept others as they are, not expect. Very, very important acceptance in any relationship. So I repeat the Mm. affirmation. I understand that everyone is different and our differences make us unique. I learn to respect the differences and accept others as they are. तो पहले हमने खुद का परसेप्शन लिया, राइट? सेकंड हमने दूसरों का what others think about us, that is also my responsibility. And third, about the situations. So I Mm. accept every situation. I accept every situation with the understanding that this moment is perfect. So I think, Manish, yeah, So another thing, am I audible? yeah, बीच में आप freeze हो गए थे. So So Am I yes, audible? what I got, can I Okay. speak? Like yes. So you are like One well last thing. I'll just explaining. finish. I'll just finish. Okay, okay, okay. I'm sorry. I'm sorry. Can I just finish? Can I just finish? Yep, yep. So the third perception is about the situation. Okay. It is a very powerful affirmation that I accept every situation with the understanding that this moment is perfect. Because when we question this moment, now we are questioning the creator. We need to understand that how can this moment, Mm. which is the culmination of billions of years of existence, how can this be imperfect? Mm. So this is how you let go of the expectations. You accept yourself, you accept other people, and you accept the situations. So this is the way I help people get out of this expectation mentality wherein you expect. So we can go on and on. I think we should take the other questions also. I think Guru Manish Charan is ji ka hath right. kafi समय से है. Yeah, but really thanks to Manish also. So I agree with Manish also. And Sandeep, if somebody is having Naam Simran injection, put it in the chat box, which we provide to our students and audience, right, Puaji, if you have. So whatever Manish said is almost like a Naam Simran injection. If you take that Naam Simran injection, Sandeep, thrice a day, I can vouch you can come out of all these negative energy. 100% vouch. अनकंडीशनल जो बोला ना बुआ जी ने आज जो समझाया यू आर लकी दैट टुडे यू जॉइन दिस कॉज एंड इफेक्ट लो आई एम श्योर जस्ट टेक योर टाइम एक दिन में नहीं होगा वी टुक हाफ एन Mm. यू एक दिन में नहीं होगा मैंने आपको अपना नंबर डाला है जस्ट मैसेज मी आई विल कनेक्ट यू विद पूजी और यू नो माय काउंसलर्स एंड आई एम श्योर you will be 100% effortlessly will be out in some days not in one day but yes you Yeah. work on that. You need to practice whatever I'm saying. We all practice and still we get triggers. I will not say that we don't get triggers. We get triggers till the last breath. But now today we can say the intensity has reduced. जो पहले मुझे गुस्सा 10 आता था जो मैं ब्लेम गेम में रहती थी वो आज हमारा मैं बोलूंगी 7 पे आया है चाहे मैं 8 साल से लगी हूँ मैं नहीं बोलूंगी कि मैं 1 पे आ गई वो हो ही नहीं सकता but at least it is Mm. reducing day by day when I'm practicing whatever affirmations Manish said, whatever Nam Simran injection we give, and these laws, 100% is going to help you. Mm. So I think, Okay, I have one last question. Like as the person before, he was saying, so what I got is like true love is just unconditional. If like we accept the flaws, we accept everything in a person and we accept it. We are not we don't want to change that person. We just accept all with the flaws. It's like that's your flaw and I accept it. It's okay.
It's like in love, what matters is just loyalty. Like, this is what matters in true love. It's not about bodies, it's not about your attires, it's not about the way you tie up your hairs or you just lose up your hairs. It doesn't matter. Does it give any effect? It's be like, you want that if you would be perfect, then I'll accept you. So that's the conditional things. Yes. So if like there is true love, it's like maybe Swami Vivekananda or something, they said like, if you love a flower, you give the water, you don't pluck them. You don't pluck that, you start giving water, and you want that flower to grow, and you don't pluck it because you don't want it to be separated from the roots. You want that flower to with the roots, and with the roots it can grow, right? Yes, thank you. You have knowledge, Sandeep, only Thank you have you. to implement. You just need to practice, right, Buaji? Yes, absolutely. Yes. So Sandeep, nice to Charan see. Kaur Khalsa. Yeah. Just come onto the screen, bacha. Put on your video. आपको कैमरा ऑन करना। यस गुरचरण जी बोलो। वॉइस नहीं है, आ रही है। आवाज नहीं है। नीलू जी आप भी हाथ खड़े कर दो, मैं आपको लेती हूँ। गुरचरण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, प्लीज आप देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टायर्ड हो गई क्योंकि रिम्पल जी से बात हो चुकी है। मैं शायद काफी टाइम से इस ग्रुप में हूँ, पर हमेशा मेरी ही बात रह जाती है। और बोलो बोलो, आप बोलो अभी। अब बोलो जी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब बातों को बहुत लंबे टाइम से फॉलो करती हूँ जो बुआ जी या इस क्लास में जीवन जांच में कहा जाता है। हाँ जी। और कॉन्शियसली मैं योगा फॉलो भी करती हूँ, एंड स्पेशली आई हैव अ नॉलेज अबाउट द कुंडलिनी योगा, एंड आई एम टॉकिंग टू मनीष सर कि मुझे ये पता चलता है कि मेरा मणिपुरक और हार्ट के बीच में देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्लटर एंड ब्लॉक। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे आसपास सब कुछ बहुत डिस्टर्ब है और मैं अपने आप को डेली सेटल करती हूँ, बट स्टिल पता नहीं मतलब दिस इज कि मैं कैसे इससे उभरूं। कि गुरबानी को मैं फॉलो करती हूँ, नॉलेज, लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट मी माई सेल्फ, और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ मेरा रिमोट मेरे हाथ में रहे, और ऐसा रहता भी है। बट फिजिकली मैं एक ही चीज को फील करती हूँ, द ब्लॉक्ड एनर्जी बिटवीन माई हार्ट एंड नेवल। हाँ जी मनीष। Sorry, the voice was breaking. I didn't get the repeat the question in short, Rimple or anyone. What was the question actually? Defines the block between the heart and the navel. When she's already practicing a lot of yoga also, and she's doing whatever we are teaching, but she said, I feel this block is there between the heart and the navel. Okay, so what do you feel? What happens? What can you just elaborate on what kind of blocks? Blocks means What is the emotion that you feel in your heart, in your stomach? I feel that my energy is want to raise up, but it sometimes it gives me pain, and many times I have to hospitalize, and there's no मतलब उनको कोई फिजिकली तो उनको कोई प्रॉब्लम मेरे अंदर दिखाई नहीं देती, बट यस ऑलवेज आई फील दैट देयर इज अ ब्लॉक बिटवीन माय नेवल एंड हार्ट। My net is not proper today, and it is again and again disconnecting. So maybe I'll shift to another internet, and I'll come back in a minute. Sorry. चलो तो मैं कहूंगी ਭੂਆ जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਦੱਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ज्यादा अपनी जो इन लॉज रिलेशनशिप है या अपनी फैमिली विच रिलेशनशिप, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट, आई डोंट वांट टू फेस। ओके ओके। अपनी रिस्पांसिबिलिटी मैं पूरी कर दी हां, जो भी मेरी रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द अदर है
I'm very sensitive towards the feeling of others. कोई की सोच रहा है मैनू सामने पता चल जाता है कि कोई की सोच रहा है. See, Charanvalji, I'll tell you one thing. The one which you want to run away, that means there is some grief, there is some sadness inside you. That is why we want to run away from somewhere, or we try to take and put things under the carpet. We don't want to face it. So we want to run away. Why we want to run away? Because there is some energy inside you. That blockage you're saying, no, that energy is there of grief. कोई old memories हैं हाले भी जितना मर्जी ऐसे कह दइए कि जी मैंने माफ भी कर दिया, मैंने माफी भी मांग ली, मैंने सिमरन कार्ड कर लिया, but somewhere you have not gone to the core. You have not gone to the core. अगर core भी जाए होते ना तो you would never run away from these people because you're doing all your responsibility तो आप कर ही रहे हो. But even then you feel I want to just run away from them because there is some grief which is already stored in the core and you have to get it out. You at least have to be very truthful to yourself and say भाई ए चीज मैं आई सा ए चीज हुई सी शायद वो हाली तक मैं खा रही है मैं हाली तक नहीं कर 101% there is some energy which is still inside you. That energy is actually making you run away from people. It is that energy which is slowly piling up between your heart and your navel, which you find there's a blockage. मैं तुसी अली पूरी तरह नो खुशी नो बयान ही नहीं कर पा. You are not able to live that life. You are doing everything. तुसी कीर्तन भी कर दे हो, पाठ भी कर दे, तुसी सब कुछ कर रहे हो. But even then, you are not able to because that energy is still there. Energy is still there. या बुआ जी जो इन्होंने बोला है गुचरण जी, सॉरी आई एम इंटरव्यूइंग गुचरण जी बिकॉज आप बोलोगे यहाँ पे टाइम. बुआ जी आप जो बोल रहे हैं इनको 1-to-1 लेके कोर तक जाना पड़ेगा. जो ये एनर्जी की ब्लॉकेज बोल रहे हैं वो एक आंसर से नहीं होगा. समवेयर दैट एनर्जी इज स्टक, वी नीड टू गो डीप इन कोर इश्यूज. ये कहाँ से एनर्जी आ रही है जिसने ब्लॉकेज की है? I'll tell you one thing. Today we did cause and effect. Okay, cause and effect. Cause is the karan and effect is the natija. A natija ki hai वे कि you having a blockage, है you want to run away. ये हैगा effect. ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੂੰ that is why when we are counseling people, we want to go to that cause. We say go to the cause. बेशक that cause may be from the childhood. Until we do not go to the cause, you cannot release it. You have to release it. You have to let go the things. Because after doing so much of spiritual practices you're doing, but even then the thing is there. So that means कितने ना कितने तुसी कुछ ही चीज नु overlook कर रहे हो या you're not confronting. You have to confront it. And that is only you have to be very truthful to yourself. कि भाई why am I running? कोई चीज हुई सी which I'm not able to go. That means अगर नहीं कीता तो आज what happened कि मेरे अंदर a blockage आ रही है. So what I have to do? I have to release them. How will I release them? Guru da gyan. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. They are all they're just like postmen come to me. They come for my evolution. ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ evolution ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. But I never did it. So ਬੱਚੇ you have to go to the core. You have to go to the cause. The ਕਾਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. Can I talk to the lady who has problem? Can you turn on the camera? I have one question for you. The girl, she has a problem. The lady, where is she? She left or she's right here? जो भाग जाना चाहते हैं. She wanna run away. She's there. She's there. She's there. Okay, I have one question for her. Yeah. Are you performing all the duties at the household, like in-laws? आपके घर पे जैसे ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, right? Even ਸਿਰਫ in the society and in the relationship, I'm ਤੁਸੀਂ all. ਸਿਰਫ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Are you a housewife or are you running any business or something? No, I'm not running any business, but yes, I'm totally in a service, selfless service. Okay, so what I do understand,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਆ we form from a egg and we form from a sperm, so ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ 50% ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50% ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। we all form this way, scientifically we form this way. Maybe you are satisfying 50% of your woman, but जो भाग जाना चाहता है, जो भज जाना चाहता है, it's a 50% of man. Maybe it can The be. yin and the yang. Sandeep, you're talking about the yin and the yang. So somewhere the yang is working. The yang is working. I never think myself as a woman. I do all the responsibility in the family as a man. So that No, means it's not. We have to accept like we are 50% women, everything. So like in Guru Granth Sahib Ji, My they destiny. said It कि was we my are destiny all. that I have to take all the responsibility at my in-laws as a male. ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ there were nobody who get the responsibility. मैंने अपने आप को एक योद्धा की तरह से हमेशा माना है और So your caring part is missing because 50-50. If 50-50 is not satisfying, we are not 100%. So scientifically, our body is formed up with two things. We are 50% mom, we are 50% of our dad. This is how a baby forms up. It's a scientific. Like I just learned this from somebody. I'm just like I'm just trying to understand why if you're inner in deep down you're feeling I wanna run away, that runaway means your 50% part is missing, and that 50% part wants to run away. If you are performing all the responsibility of your male, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 50% ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। caring, yes. Yes. That and 50% ਔਰਤ I'm happy that I'm very honest in front of all of you. Yes, very good, very good. unless or until you're honest, you don't get the answers. Answer. Just open your heart in front of everybody because we underestimate the things, but no, everybody has great knowledge. You don't even know. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। If you have courage, if you have that curiosity to learn about the things. It happens with me. I'm giving you an example. मैं गुरुद्वारा साहब बैठी सी, I was so confused. मैं नहीं confused सी और मैं सिर्फ जाके ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਵੀ and everybody is just like stretching me, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ। देयर वाज अ ਚਾਈਲਡ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਮ ਔਨ ਕਮ ਔਨ ਕਮ ਔਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਜਸਟ ਔਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਆਰ ਸੋ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਨੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੋਲਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ escaping from the emotions। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ।
तो acceptance is, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੇ Yes. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ that is your woman inside। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ, ਉਹ ਕੇਅਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। Very good. Very true, Sandeep. Very true. Very good. Well, I'm agreed with your answer because I'm thinking question is mine and answer is very near to my query. I think so because मेरा goal ही life ਦਾ ਹੈ। I want to settle or at my core. That is my own मतलब जो नीचे है मेरा, है ना? क्योंकि गुरबानी भी ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੁੱਤੀ ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ, है ना? So my journey is more spiritual than physically. I am very contented. I have everything that I needed and more than even I am in the मतलब ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਯੈਸ, ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਟਲ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ, ਇਨ ਦਾ ਸੁਖਮਨ, ਇਨ ਦਾ ਸੁਸ਼ਮਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ serenity in my, because I'm very nearer to all the 5 koshas, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं So I अपने would say, बैठना so I चाहती would say Time हूँ, is like, just a सही लग गया। present moment. क्या मनीष क्या बोले? देखो जानना बहुत जरूरी है, पर जानना तो जाने, उसको मनना, उसके ऊपर मनना। चलना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल या चरण जी, मैं इसको एंड करूंगी आपके क्वेश्चन को कि 10 साल से हम भी बहुत चले गए डीप में, पर ऐसा नहीं कि मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ। स्टिल No, I don't want to be perfect. I don't want to be nobody can be perfect. पर जो आप बोल रहे हैं ना, ट्रिगर्स अभी भी आते हैं। कभी सब लोग मुझे बोलते, तू इतना जीवन जाच चला रही है, तू इतनी गुरबानी में डूबी पड़ी, 24/7 बलजीत मैम बुआ जी से दिन चढ़ता रात कब होती, पूरा दिन डूबे पड़े हैं। बट तो भी मैं बोलूंगी कि ऐसा नहीं कि मुझे ट्रिगर्स नहीं आते, मुझे भी लगता है मुझे क्यों वो नहीं मिल रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा 100% जो बुआ जी कहते हैं वो फेथ फ्लॉलेस, वो कहीं ना कहीं स्टिल आई नीड टू वर्क। एंड वो सबके लिए, नॉट मी एंड यू, इवन बुआ जी ऑल्सो, मनीष ऑल्सो, ऐसे नहीं इन लोग को ट्रिगर नहीं आते हैं। संदीप, थैंक यू। No So worries. It's be really, like, it's not me. There is something like, I'm not saying all those things. It's like I'm accepting this because I don't have that much knowledge right now. I'm just 28 years old. I don't have that knowledge, but yes, maybe it's like my parents. It's like today I'm totally accepting it's like my mother and father, and it's their mind who combines this mind to me. And I know like they formed up, and they were pure. Maybe they are there, or maybe they are not here in this world, but they formed up this mind and they are behind me. So the power behind me is of my parents. It can be a nature, it can be my physical parents. So I'm just accepting it's not like I'm knowledgeable, it's just because this knowledge is transforming in me with my parents, with nature, and with somebody.
So I just really want to use it, because unless or until I'm sharing this knowledge, it's gonna stuck with me. I don't want it. I want this flow to go again, to go. It's like it's a flow. It should be in flow. Yes, thank you, Sandeep, I Sandeep, can for just sharing. Yeah, and let add me a take little question. to it, Yeah, which yeah. says, Sandeep, that as you say that what it is not you, so we put it in this way, it is He who speaks through us. Yes. So it is It's He, like, trust the universe. It is He who speaks through us. Yes. because Thank I you don't so have that deep knowledge. Yes. Yeah, so we have another question also. I think it's 9 o'clock now. I'm so sorry. It's still 8 o'clock. Today we extended to 2 hours. I really apologize everyone for this delayed. Neelu ji, can we take your question next time? Or फिर क्या? Uh, come onto the camera and just give your question, bacha. Give your question. नीलू जी, The camera is not coming up. चलो Okay. ठीक है. अच्छा, Visualize question. कर लेते हैं. Question बोलो आप. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ना बुआ जी यही है कि सपोज यू सेड कि कर्मास व्हेन यू कम टू नो कि you've done something wrong Mhm. and you start realizing it Mhm. कि we've done this much and this much wrong and we start improving ourselves, then Okay. also the karma what has been done by us will be reaped or it will come back. Yes, but देखो what happens when we sow the seed into the subconscious mind. हाँ जी. These seeds and all gets into the universe. It goes into the universe. Now it is in the universe, has its own frequency. With time, place, person, when it gets in tune with everything, it manifests in front of you. अब वो 2 साल के बाद आए, 4 साल के बाद आएगा जरूर. But if you are practicing on this line and this truthful living, you are practicing, you create a vision. There are 3-4 things that which happen. First thing, Anji. when you are doing this Nam Simran and creating beautiful seeds inside you, that means you're creating a beautiful destiny future. Second thing, when you're creating this beautiful energy inside you, you are diminishing, you are finishing off the negative forces. Second. Anji. Third, whatever will come in your life, what you have sowed, they will come. You're not going to be spared. They will come, but by that time, your vision changes. Because of the knowledge, your energy is that high that you can recognize that these are all my own karma that are coming back. And your vision, what? Ab dukh mein bhi sukh dekhoge. That is what Bani said. Dukh vich bhi sukh manao. That is the beautiful जी vision. मैं एक बोले कर्म राय फिर कागज फाड़े. हाँ जी. नहीं कुछ नहीं बोली. Understood, Neelu? मनीष आप कुछ बोल रहे तो थे. क्या मैं जी, just छोटी thank सी you बात बुआ ऐड जी. करूंगा. Thank you I so just add much. one thing. That don't worry about your past karmas. So there is a very famous saying that we cannot go back and start a new beginning, but we can start today and make a new ending. So let's focus on the today, what's in our hands today. Let's not worry कि past में हमने क्या गलतियां करी नहीं करी. बुआ जी, can I share a screen, एक छोटा सा screen, how to हाँ जी. master stress, since we are talking about mental health. So I got a very nice मैंने PowerPoint बनाया था on the science of stress. Okay, so this is how you master stress in your life, because stress is so common these days. So this is an acronym. I'm just sharing the screen. You can take a photograph. We don't have time to discuss. So these are like few of the practices which you can do to master stress in your life. So M stands for maintain healthy eating, avoid social isolation, stay informed, not obsessed, talk to others. Very important. Talk अपने अंदर दबा के नहीं रखना. Talk to others, engage in mindfulness, relax, play, exercise, start journaling, take deep breaths, rest and sleep well, engage in gratitude, so important, step outside into nature and seek support. जैसे हम यहाँ पर जीवन जांच में कर रहे हैं हम, seek support from friends, family, professionals, buajis, Rimple, so many are there here to help you out. So this is a nice, I thought I should share this. Yeah, I hope everybody's taken a photograph. Yeah, I have just I just have one answer for the karma. If we say कि साडे कर्म पिछा नहीं छड़दे है, but like in Gurbani and everywhere, it's be like forgiveness. माफी ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, and we try to understand ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ if somebody is afraid of karma ਅਸੀਂ ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ and and the nature is so wide nature ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ because you can just see ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ she Manish, forgive everybody if uh, we are afraid of karma as like ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ I accept that ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ I did lots of things but ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ and nature forgive us and yes. that's true. So I just want to end the session today. Thank you so much, Sandeep, with this healing insight. जो भी सब बोल रहे हैं, like flowers that bloom after rain, like flowers that bloom after rain, our hearts can heal after pain. It takes time, a little care, but slowly joy finds us there. The mind may wander, lost at sea, but hold on tight, let yourself be. Breathe deep, in and out. Trust yourself, have no doubt. Every storm will pass, you will see, and leave behind serenity. So take it slow, no need to rush. You will bloom again in quiet hush. You will bloom again in quiet hush. So thank you so much, Jeevan Jaj audience, for today spending 2 hours with Jeevan Jaj. Thank you so much. But I just want to say, apologize, Pal ji. Storm तो बहुत ज़्यादा आ रहा है बॉम्बे में निश बहुत जबरदस्त storm आ रहा है so I have to close the windows in Mumbai so Pal ji I'm so sorry if you can take 1 minute because आपने raise hand किया था मैं ले नहीं पाई. Over to No you. problems, Ji. Thank you, Ji. Wahaguru Ji ka Khalsa, Wahaguru Ji ki Fateh. While you close your windows and the storms that are in Mumbai, let me also use that same analogy in 1 minute to say our lives will always have storms. Saadi zindagi de vich bade tufan aange. But aaj mental health nu yaad karke, let us remember prioritize self-care. That's the takeaway number 1. Apne vaste asi apna dhyan rakhiye. Number 2, start small. Bhave choti achievable goals vi asi karange na. Gradually increase kar lange. Number 3, let us challenge negative thoughts and forget about all the desires. Kehte ne na asa mansa sagal tyagya jagte rahe nirasa kam kro japar se nine teh kat brahm nivasa. I think that's a summary that Puaji's exact thing. She was talking about letting go of the ego, letting go of all the desires and expectations that we have. But mere akhile do point ahi honge ki let us find a support system jira sanu ithe Jeevan Jach vich milda hai. Because when we come here we learn so much, we have patience, we have persistence. I'm very sure it is all going to be all okay. Odo jado main hand raise kita siga, odo Sandeep ji jo share kar rahe sige, ode vich main bas ek sentence kehna si, it is all about balancing our emotions with the empathy and the love that we have for the world. So let's take home this message that today on Mental Health Day, sari dunia de vich main akhila point kamanga 780,000 people commit suicide around the world every day. Let us reach out. Let us heal ourselves. Let us help all these wonderful people because there is so much the world needs the care for. And if we can use the power of Nam Simran, and I thank you for sharing that card, I think not only our lives, our families' lives, but the lives of everyone will become much better and better. So thank you, Ji, for a beautiful Mental Health Day celebration, linking it all back. It is all about the storms in Mumbai, but the storms of our life will also go away the moment we reconnect with everyone. Thank you, Ji Samadinda. Bahut dhanwad. Upal chuk di maafi. Wahaguru Ji ka Khalsa. Wahaguru Ji ki Fateh. And That may was the all voice our I was waiting for. So deep gratitude to Palji, Manishi, Puaji, Pajit Kaurji, and to all my audience, including me also. I pat myself also for the I got effort it. we are taking for this Mental Health Day. And we are going to rock. We are going to handle this beautifully. The wisdom we gain from Palji, Baljit ma'am, Manish ji, Vindri ji, Rimple ji, and entire Jeevan Judge counselors. Salute to you guys. Waguje It's Khalsa. like it's my direct message that was the voice I was waiting for. And thank you so much. I'm so grateful. I know it's you and I was waiting for you.
I will Thank be you with ji. you super soon. Thank you Vaiguru ji ka Rimple ji and thank you Khalsa, Vindri Vaiguru ji ji. ki Very Fateh. nice. Thank you, Cindy, for sharing. And Thank everyone, you ji. bye everyone. Thank Take you, care. thank you, Rimple Vindri ji. ma'am. You all take so much the volunteers. Really, I want to thank today to the volunteers. We took so much trouble to gather all these topics, the messages, and I cannot express. Thank you We all are on the so same much. journey. We are on the same train. Yes, Worry. actually, Together we have to win. So we are we doing learn for from ourselves, not for others. We are healing yes, ourselves. ourselves, right? Thank you, Thank Buaji. Thank you, Thank you, everyone. Buaji. God bless. Thank you, Auntie. Love Thank you you, all. Thank you, Rimple ji. Buaji. Thank you. Thank you. Thank Love you, you. बच्चा. Love you. Love Love you. you, Love you, Buaji. Auntie. कैमरा ऑन करो भी सब लोग. कैमरा ऑन करो, डरो मत. Everyone. बूजी Love किसी you, को नहीं Buaji. खाएगी. Love you, Buaji. Love हाँ, you, Buaji. love you ना बच्चा. Love you. Thank you so much, Buaji. Thank you so I much. love you all who like listen to me. Nobody listened to me. They said like you're talking nonsense things, but you have your No, patience. You no, listen to me. I'm so grateful to all of you. no. I'm so grateful. It's Love like you. I love you all. Love you, Okay, बच्चे. now Love you. Love And everyone you hug all. especially to that voice that was at yourself. the end. Yes. चलो hug Baji, yourself. you're fan. Thank you Buaji. Thank you Buaji. Thank you Rimple ma'am. Thank you, Buaji. Thank you Thank you so from much. Love you, बच्चे. Love such you a all. nice session. Bubbly ji, everybody attending the session. Thank you ji. Thank you Rimple ji and Manish ji and Vindri ji. Very nice topic. Shukriya. Very nice.